बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चैप्टर 34 डायरेक्ट इनडायरेक्ट थर्ड पार्ट। इस चैप्टर में हम फ्यूचर टेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना, चेंज करना सीखेंगे। इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, विल बी चेंज्ड इनटू वुड। इन द सेम मैनर शैल को हम शुड में चेंज कर देंगे, यानी कि विल जो है वुड में चेंज हो जाएगा और शैल जो है शुड में चेंज हो जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रहे, हमारे स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम केवल और केवल विल का ही प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने विल के चैप्टर में डिस्कस किया है पहले। एग्जाम्पल्स, ही सेड आई विल स्टडी द बुक, ही सेड दैट ही वुड स्टडी द बुक, शी सेड आई विल बाय अ कंप्यूटर, she said that she would buy a computer. They said to me, we will send you gifts. They said to me that they would send me gifts. I said, I will not take the exam. I said that I would not take the exam. Future continuous tense में will be जो है वो would be में convert हो जाएगा। I said to him, I will be waiting for him. I said to him that I would be waiting for him. She said that she would be shifting to a new house. He said, I will be working hard. He said that he would be working hard. He said, he will not be flying a kite. She said that he would not be flying a kite. Future perfect tense, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव जो है वो वुड हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। ही सेड आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क, ही सेड दैट ही वुड हैव फिनिश्ड द वर्क, शी सेड दे विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, शी सेड दैट दे वुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, ही सेड आई विल हैव गॉन, ही सेड दैट ही वुड हैव गॉन। नाउ इन WH फैमिली लेट अस डिस्कस अबाउट whom। अब हम बात करेंगे WH फैमिली के whom की। whom मीन्स whom इज यूज्ड टू नो अबाउट अ पर्सन, एक व्यक्ति के बारे में जानने के लिए। इसका फॉर्मूला है whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका हिंदी मीनिंग है किसे, जैसे कि whom do you know, तुम किसे जानते हो। Whom do you want to see, तुम किससे मिलना चाहते हो। इसी प्रकार से बाकी सेंटेंसेस को भी आप बनाइए। Whom did you meet yesterday? Whom did you want to promote? Whom will you meet there? Whom do you want to sell your house? Whom will you elect for next prime minister? Whom will they catch red-handed? Whom do you want to make your good friend? Whom did you call a nice personality? Now, situational conversational exercise। बैंक में एक कस्टमर और कैशियर के बीच में की जाने वाली बातचीत। कैशियर, हाउ मे आई असिस्ट यू? कस्टमर, आई वॉन्ट टू विड्रॉ सम मनी। कैशियर, फिल दिस विड्रॉल फॉर्म। कस्टमर, I have filled the form. Here it is. Cashier, mark your signature too. Customer, yes, here it is. Cashier, so you want to withdraw rupees 20,000? Customer, yes. Cashier, here it is. Please count and verify. Customer, okay, thank you. Now, the next situation is for hotel reservation. एक होटल रिजर्वेशन के लिए रिसेप्शनिस्ट और गेस्ट के बीच में की जाने वाली बातचीत। रिसेप्शनिस्ट, good evening, how may I help you? Guest, hi, I would like to book one room. Receptionist, for when? Guest, the 8th August. Receptionist, for how many guests? Guest, 4 people. Receptionist, for how many days? Guest, for 4 days and nights. Receptionist, okay, I have reserved 2 rooms on 8th August for 4 people. Guest, thank you very much. Receptionist, thank you, have a nice day. Now, asking directions.
स्पीकर 1 और स्पीकर 2 की बातचीत दिशाएं पूछने के लिए या कोई रास्ता पूछने के लिए। स्पीकर 1, एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर खेड़ा टेम्पल इज? स्पीकर 2, यस, गो अहेड, टेक राइट टर्न, देन अगेन राइट टर्न, you will reach to Khera temple. Speaker 1, Chokjar is also there. Speaker 2, yes. Speaker 1, thank you very much. Speaker, no problem.